The tool histogram is connected to statistical distribution. So there are certain assumptions actually on statistical distribution, like normal distribution, which is the most common distribution. That is why it is called normal also. तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे in the मॉड्यूल नंबर 10 and 11, जब हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और उसके साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट चांस कॉज, असाइनेबल कॉज, वेरिएशन, वेरिएशन अवॉइडेबल, वेरिएशन अनअवॉइडेबल, ये सब जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में और डिटेल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. So let me take you to the presentation on histogram. What is a histogram? So as I told you that histogram is a numerical data analysis tool, and it helps us to understand the pattern of the data. And by studying the pattern of the data, we conclude on several aspects related to the state of the control on that particular process. तो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करने के पहले एक हिस्टोग्राम अगर आप प्लॉट कर सकते हो, that actually works as a very good prerequisite before you start conducting the process capability study. So you can consider the discussion on histogram as also an important prerequisite for process capability studies. So how it is to be done, let us see. So histogram, in order, it is the tool number 5, patch number 2 hai in the 7 QC tools in order. Okay. So the data has a tendency to be centered upon a maximum of large numerical value. Okay. And from there it spreads out, gradually decreasing. The analysis of the situation is placed into columnar graphical form. मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि it has a tendency to be centered upon a maximum. आप देख रहे हो ये tendency to be centered upon a maximum of large numerical value. ये जो बीच वाला पॉइंट है जिसको हम मोड भी कहते हैं, MOD मोड भी कहते हैं. तो ये मोड जो हम लोग लास्ट प्रोग्राम में कवर किए थे, डेटा में मीन मोड मीडियन, एक फिल्म भी देखे थे हम लोग. तो ये मोड जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी को इधर दिखाता है, और दोनों साइड में ये मोड से आप अगर राइट साइड में चले जाओ या तो लेफ्ट साइड में चले जाओ, धीरे धीरे इस साइड में वाई एक्सिस में है फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस में है डेटा रेंज, डेटा इंटरवल. तो आप जैसे राइट साइड में जाओ या तो लेफ्ट साइड में आप जाइए, आपको दिखेगा कि आपका इंटरवल वाइज फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है. ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है नॉर्मली. लेकिन इसका काफी एक्सेप्शंस है जो कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन जो पिक्चर हमें दिखाता है, कॉन्वे करता है, वो पिक्चर का मतलब क्या है. ठीक है. So the analysis of the situation is placed into columnar graph. What is columnar? These are all columns, bars. That is why it is called columnar. So normally in a histogram, ये जो bars है like Pareto chart, ये लगा हुआ रहता है. That you have to remember. ये लगा हुआ रहता है. कई बार होता है कि हम लोग को मिलता नहीं है वो लगा हुआ चार्ट नॉर्मली, तो हम उसको दिखाते हैं. These are spaced out. But remember that spaced out जो चार्ट होता है हिस्टोग्राम को, उसको आपको ठीक से चूज करना है so that it sits closely. They are touching each other. यूज क्या है? To understand the pattern of the data. Very important. Pattern of the data. Why pattern of the data? If it is a continuous data, it is coming from a stable process, it should be normally a normal distribution. So अगर ये normal नहीं है, then you can conclude several things about the process. कि abnormality के पीछे वाला reason क्या है? To grasp the past and present situation. To stratify. जैसे मैंने स्ट्रेटिफिकेशन में आपको दिखाया था, 2 हिस्टोग्राम प्लॉट किया गया था फ्रॉम 2 डिफरेंट सप्लायर. मैंने दिखाया था आपको कि वो 2 अलग अलग हिस्टोग्राम दिख रहा है. ठीक है. तो ये पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन भी दर्शाता है. कभी कभी आपने अगर ये हिस्टोग्राम के ऊपर काम किया, मानी कि इसका काफी सारे पॉइंट दोनों साइड में रिजेक्शन हो रहा है, तो
अगर इंप्रूवमेंट के बाद आपने और एक हिस्टोग्राम प्लॉट किया, तो वो हिस्टोग्राम इसके नीचे, बिल्कुल नीचे अगर प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा कि वो हिस्टोग्राम में आपका टोटल जो वेरिएशन है, स्प्रेड जो है वो नैरो हो गया। तो वो दोनों अगर एक ही स्केल में प्लॉट किया गया तो आपको बाजू बाजू में अगर दिखता है तो आपको करेक्टली कम्युनिकेट करेगा कि हैज योर इंप्रूवमेंट रियली वर्क टू गिव ए बेटर कंट्रोल, ओके, बेटर प्रोसेस टू कंफर्म द इंप्रूवमेंट रिजल्ट, जो मैंने अभी बोला है आपको, ठीक है। सो यू कैन एग्जामिन वेरिएशंस कलेक्टिवली बाय लुकिंग एट द हिस्टोग्राम। क्यों कलेक्टिवली बताया जा रहा है? देखिए, कोई भी प्रोसेस के पीछे काफी सारे फैक्टर होता है which causes the variation. Like for example, operator may be a source of variation. Machine का different हिस्सा may be cause of variation. Tool may be a cause of variation. Input material may be cause of variation. So constantly changing setting is a cause of variation. लेकिन finally जब data मिलता है, they are all plotted together, then it is giving a collective picture of the entire variation. So like for example, in this histogram, it is giving you the collective picture of the entire variation. Okay, ये आपको दिखा रहा है अभी parts of a typical histogram. Okay, so number 1, days of operation prior to failure for a HF high frequency receiver. So days of operation prior to, days of operation हम लोग प्लॉट कर रहे हैं इन द एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसी हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ऑन द वाई एक्सिस। ओके, सो फेलियर के पहले कितने दिन ये रिसीवर काम किया, इसके ऊपर हमारा डेटा कलेक्ट किया गया था और वो डेटा को हम लोग कुछ इंटरवल में बांट दिया। फिर किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में कितने फ्रीक्वेंसी है उसको हम कॉलम के दौरान हम लोग दिखा रहे हैं, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू गेट ए हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। एक है, अगर मानिए कि ये क्लास इंटरवल आप बहुत ज्यादा कर दिया तो इट विल लुक लाइक ए फ्लैटेंड हिस्टोग्राम। अगर मानिए कि आपने ये क्लास इंटरवल को बहुत नैरो कर दिया, इट विल लुक लाइक ए क्लिफ। तो that is why there should be a standardization norm how to draw it. So normally the highest frequency और the base, इसके बीच में एक रिलेशनशिप अगर आप रखने का कोशिश करो, तो स्टैंडर्ड अगर रखने का कोशिश करो अगेंस्ट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पता चलेगा कि हमारा हिस्टोग्राम कहां पर है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलिंग। हिस्टोग्राम का एक्स एक्सिस का स्केलिंग और हिस्टोग्राम का वाई एक्सिस का स्केलिंग फॉर द गिवन डेटा सेट, you have to really find out that if it has to be a normal distribution, how it will look like, and based on that you have to benchmark your histogram and then see where it is placed. Okay, but it will give you a good pictorial picture, but that is not enough actually. I will tell you that what are the other practical analytical methodology. So what is number 2? Number 2 is, as I told you, that it is the scaling of the number of intervals, deciding the number of interval for the x-axis data. उसके लिए एक simple formula है, मैं आपको बताता हूँ. And then number 3 is the bars. The bar का height क्या है? जैसे आप ये हिस्टोग्राम में दिख रहे हो कि एक मोड है, इधर मोड है, शायद ये मीन भी होगा, शायद ये मीडियन भी होगा। तो वो धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है माने जितना आप सेंटर से राइट साइड में जाओ या तो लेफ्ट साइड में जाओ, आपका जो बार का जो हाइट है वो कम हो रहा है, राइट। दैट इज द कंक्लूजन फ्रॉम नंबर 3। व्हाट इज नंबर 4 इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है इधर, शायद आपका टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। अदरवाइज दिस by your wrong design the entire histogram will look flattened, so don't do that. And also the scale here and the scale here should be this interval here space out and this interval, this spacing, it should have a correlation so that they are comparable to each other. What is point number 5?
Mean time between failure in days for so and so data taken. So you explain the data taken. You explain that. Title, horizontal x-axis, bars, vertical y-axis, and the legend. So analyzing the histogram. In statistics, the features of interest for a set of numerical data can be classified as center. So, as I said, that what are the main benefits of plotting a histogram are the studying of the pattern that is emerging from the histogram. So, in the pattern, there are three important points we'll be taking up one by one. The first is centering. So we need to understand कि ये histogram का center कहाँ पर है. Okay, describes where numerically the data are centered or concentrated. What is that? Center describes where numerically the data is centered or the concentrated. So just say the data is centered in this case of HF receiver is between 30 to 35 class interval. Okay, and shape describes how the data are spread out around the center with respect to the symmetry or skewness of the data. तो आप इधर देखो, ये जो है symmetry जो है, the shape जो है, ये it is like a bell shaped curve. What is a temple bell जैसे दिखता है, ये ऐसे ही है. तो ये spread out किया है, left side को more, right side को कम. So we can say that it is skewed. It is skewed to the left side. Okay, skewed to the left side. क्योंकि ये spread out कर गया ज्यादा, तो उसका मतलब ये थोड़ा सा shift कर गया. The center थोड़ा सा shift कर गया to the right side. Okay, तो ये सिमेट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हम अपना जो हिस्टोग्राम है उसमें सिमेट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है टू द सेटिंग. तो सेटिंग हो सकता है थोड़ा सा टारगेट वैल्यू से थोड़ा सा राइट साइड को शिफ्ट कर दिया. वेरिएबिलिटी describes how the data are spread out around the center with respect to the smoothness and the magnitude of the variation. जैसे हम लोग इधर देखा कि वेरिएशन जो है, अगर मैं सेंट्रल लाइंस में एक लाइन ड्रॉ करूं और मैं देख सकता हूं ये बीच वाला जो 32.5 से ये 60 तक गया है, यानी करीबन इट इज अबाउट 27.5, और इधर करीबन 32.5 से ये 0. जैसे मैंने आपको बोला था ये सेंटर से 32.5 है और सेंटर से ये पॉइंट है 27.5. तो दैट इज व्हाई आई सेड दैट इट इज स्लाइटली स्क्यूड ऑन दैट. तो वेरिएशन जो है, वेरिएशन इज spread out, but actual variation हमारा requirement के हिसाब से कैसा है, that you can understand only after we draw the upper spec limit and lower spec limit on the histogram. Okay, so that we will be able to understand, and also the smoothness. Smoothness means that whether it is smoothly coming out or there are steps by which it is coming down. So each observation will help you to conclude different perspective about the process. ठीक है? So how do you construct a histogram? So I'll come one by one and then you will understand it properly कि histogram को हम कैसे construct कर सकते हैं. So count the number of data points. That is the first thing. तो मानिए कि आपने टोटल जो डेटा कलेक्ट किया है वो है 50. तो आप टोटल ऑब्जर्वेशंस है, मानिए कि आप हमने एक डायमीटर का डेटा ले रहे हैं और वो डायमीटर के ऊपर डेटा हम लोग लिया है, लगातार 200 डेटा लिया है, तो माय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 200. और इफ आई हैव कलेक्टेड से RF frequency and we have collected data of say 160, so my data set will be 160. Then the question that comes for plotting the histogram is how do I decide the class interval? My very simple rule to you, there are tables given actually in quite a few books. You will see
that between so many data to so many data, n equal to x to y, select so many, select this class interval. तो मैं आपको एक सीधा सा सिंपल फॉर्मूला देता हूं, रूट n. तो अगर मानिए कि आपका डेटा है अबाउट 160 करीब, तो टेक द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 160. So it will come to approximately say 12 point something. So make it round number. So 13. So that will be 13. So when you plot the histogram, whatever is the class interval that you are getting this way, you add 1 to it for actual tabulation of the data. वो कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट पेज में आपको ये बताऊंगा. ठीक है? I think, I hope you understood that. So there is a procedure which I am going to explain you. Compute interval width. अभी क्लास इंटरवल कितना होगा वो हमें पता चला. अभी हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा जो इंटरवल का width है वो कितना है. हमारा जो इंटरवल का width है वो कितना है. So find the data range, divide by the class intervals. What is the data range? Data range is the maximum of the data of 160 data say, and the minimum of the data, that is called the data range. So data range से divide कीजिए class intervals plus 1. मानिए कि हमारा class interval है 13 plus 1 14. तो 14 से जितना data range है उसको divide कीजिए. Make it to one place of decimal more than the original data set. जैसे मैंने बोला, start from minimum and keep adding the class intervals. ठीक है? सबसे जो कम डेटा है उससे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए क्लास इंटरवल के हिसाब से. एंड फर्स्ट क्लास विल बी लेस और इक्वल टू अपर बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास. ओके. एंड लास्ट क्लास विल बी मोर और इक्वल टू द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास. कैसे होगा? लेट मी डेमोन्स्ट्रेट टू. मानिए हमारे पास 50 डेटा पॉइंट है. फॉर सिंप्लिसिटी, normally histogram can be plotted with much higher number of data. I prefer about 125 as the total number of observation. उसके नीचे जो शेप है वो ठीक से नहीं मिलता है. तो अगर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है तो जितना डेटा है उससे प्लॉट कर सकते हो, बट शुड नॉट बी रियली लेस देन 70-75. तो 50 मानिए कि हमारा डेटा पॉइंट है. लोएस्ट है 2.5, हाईएस्ट है 18. सो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना हुआ? 7.07. How did you get 50 square root here to 7.07? So as I said that add 1 to it. So कितना हो गया? 7 को अगर अप्रोक्सीमेट करो क्लास इंटरवल तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो 7 + 1 8 हो गया. So the class interval data range is 18 मैक्सिमम है, मिनिमम कितना है 2.5. 18 minus 2.5 is 15.5. ठीक है? So the class interval will be 15.5 divided by 8, that is 1.94. अब हम क्या करेंगे? क्लासेस को डिटरमिन करेंगे. कहां से शुरू करेंगे? 2.5 से शुरू करेंगे. तो करने के लिए हम 1.94 के पहले डिवाइडेड बाई 2. 1.94 divided by 2 is 1.94 is what? The class interval. तो ये क्लास इंटरवल को मैंने 2 से डिवाइड किया. 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला? 0.97. तो व्हाट आई डू इज नाउ 2.50 माइनस 0.97. क्यों? मैं 2.5 को लास्ट क्लास का बीच में रखना चाहता हूं, लगभग बीच में. और जो मैक्सिमम पॉइंट है जो है अपना 18, उसको जो सबसे लास्ट क्लास है, ऊपर का क्लास है, उसका बीच में, लगभग बीच में. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीच में आ गया क्योंकि थोड़ा करेक्शन होगा, उसके बीच में आना रखना चाहता हूं. तो 2.5 माइनस 0.97 1.5. तो मैं क्या करूंगा? अभी 1.53 से क्लास इंटरवल को ऐड करते जाऊंगा. तो 1.53 प्लस कितना 1.94 कितना हो गया मेरा 3.47. तो ये क्लास को मैं क्या कहूंगा? लेस देन इक्वल टू अपना 3.47. 3.47 क्या है? अपर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास. कहां से मिला? 1.53 से मैंने ऐड किया 1.94, तो मुझे 3.47 है. मतलब हमारा जो एकदम पहले वाला क्लास है, पहला क्लास है, उसको मैं कहूंगा क्लास इंटरवल
It is all data which will be falling below or equal to 3.47 will be put under this. Then बाकी बहुत ही सिंपल है. अगर मुझे 3.47 मिल गया, keep on adding 3.47 से 1.94. So 3.47 plus 1.94, 5.41, 5.41 plus 1.94, 7.35, plus 1.94, 9.29, 11.23, 13.17, and again 1.94, I get it 15.11. तो और ये क्लास जो है आप देखोगे, ये क्लास सेकंड क्लास का फर्स्ट बाउंड्री होगा पहले वाला क्लास का लास्ट. मतलब 3.47 इधर, 3.47 इधर, 5.41 इधर, 5.41 इधर, 7.35 इधर, 7.35 इधर, 9.29 इधर, 9.29 इधर, एंड लास्टली 13.17 इधर. तो जो सबसे ऊपर का क्लास है उसको मैं लाइक द फर्स्ट क्लास कहूंगा, कॉल इट ग्रेटर देन इक्वल टू 13.17. मतलब ये 50 डेटा में से जो भी डेटा 13.17 के ऊपर है इधर रखूंगा. So once we do that, then the next process is very simple. What I do is that I keep on reading out one by one data and then start doing the check sheet thing, what we discussed earlier. कि ये क्लास में कितना डेटा है, ये क्लास में कितना डेटा है, ये क्लास में कितना डेटा है, और उसको देखूंगा एज ए स्ट्रेटिफाइड डेटा शीट. और वो स्ट्रेटिफाइड डेटा अगर आप ठीक से प्लॉट करो ऑन द चेक शीट इटसेल्फ, यू विल बी एबल टू सी द हिस्टोग्राम. नहीं तो आज के दिन में एक्सेल शीट में you can always get the histogram directly drawn. But remember one thing, class interval still you should be selecting actually. That correct data collection also is your responsibility. And interpretation also is your responsibility. But histogram may be plotted by your Excel sheet. And it will be good if the number of class interval and the class boundaries are really determined properly with the use of software. Software can give you any result provided you are able to use the software properly. So this is another data set that you are able to see. Our target was here, and the variation is on the right side. So this is a data set which is saying that we are quite far from the target, and our misses are on the right side on this side, and our misses on the left side are on this. And either say either tak, we are saying that these can be considered to be hit. But still, the point is that though the target encompasses from here to here, but the problem is that there are certain misses. So we have to really find out how to do the resetting. Okay. So analyzing the histogram, अभी मैं थोड़ा technical discussion में जाऊंगा. A histogram is said to be symmetric if when we draw a vertical line down the center of the histogram, the peak, the two sides should be identical. देखिए ये histogram मैंने किया था using a column chart. That is why I did not get the proper histogram. But you will be able to get, if you use the histogram tool in the Excel, you will be getting all the bars touching each other. So this is, don't get misled by this. Here it should be touching each other. Okay. So this is my spread actually on either side. So for a symmetric histogram, it should be similar. That means if you place a mirror on this side and this side should be merging. A skewed histogram is a one with a long tail extending to either right or left. So you can say right skewed, positive skewness. Matlab entire data set is actually spreading to the right side. It is called right skewed. If the entire data set mostly, entire or most of the data set is spreading to the left side, you call it a left skewed. Now, technically, if you look at the reason for this and this could be totally, the reason could really come out very different in a sense that for a right side skewed, it is possible that the operator is constantly, after getting the product out, he is finding that the product is on the left side, and therefore he is actually overside, and therefore he is really adjusting it by reworking it. And so by reworking,
the data is being brought to the lower side. So if the data constantly is coming to the lower side, most of the data will be on the left side. So you'll be getting a left side skew. So you can really infer quite a few things about the process, how the process is getting managed by analyzing the histogram. And that is the purpose of one of the main purpose of the histogram. Mode is the observation of the greatest frequency. A unimodal histogram has only one peak. A bimodal histogram has two peaks, not necessarily equal in height. Like आप इधर देखो, दो bimodal एक हिस्टोग्राम में दो मोड दिख रहा है. मे बी ये एक ऑपरेटर एक अलग सेटिंग में किया, एक दूसरा ऑपरेटर अलग सेटिंग में किया. मे बी ये आया एक सप्लायर से जिनका सेटिंग अलग था, ये अलग से आ रहा है. मे बी दिस इज फ्रॉम ए पर्टिकुलर लॉट ऑफ इनकमिंग मटेरियल, दिस इज फ्रॉम अनदर इनकमिंग मटेरियल. तो आपको अगर बैकग्राउंड डेटा के बारे में पता है, यू विल बी एबल टू रियली इन्फर क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द हिस्टोग्राम इंटरप्रिटेशन. और अभी ये चार्ट में देखिए, इधर एक छोटा सा एक अलग सा हिस्टोग्राम दिख रहा है. हो सकता है ये सेटिंग के टाइम में बना हुआ है और ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. Analyzing the histogram, when data are not very variable, the frequency of the observation decreases steadily as you move away from the center. It can happen like this. एक है flat, एक है quite steep. So दोनों का एक्चुअली टेक्निकल मीनिंग अलग अलग रहेगा. इसका देखिए स्प्रेड आउट कम हुआ, इसका स्प्रेड आउट ज्यादा हुआ. इसको कहता है comb type distribution. What is comb type distribution? Actually, the moment you are getting a particular data, what I'm trying to do is that as an operator, I find that there is some error in my measuring equipment. So what should ideally be should have gone here in this class actually is being approximated by the measuring instrument to the left side. That means what I am using is a lower accuracy measuring instrument, and based on that I am actually putting down. But when I'm plotting it with a my measurement equipment is able to read actually point first place of decimal, but मेरा जो class interval है उसमें by force actually it is going to the next class interval because I have kept the class interval up to the second place of decimal. तो जो इधर आना चाहिए था वो इधर आ गया. So that is what could be the main one of the reason behind the comb type distribution. What comb, जिसको कहते हैं जो when you comb the hair you use a comb, so it looks like that. So within limits है क्या नहीं, the entire histogram you plot, superimpose the upper spec limit, lower spec limit to understand that. So analysis of the histogram, it is general type histogram, it is symmetric, single mode, and it's single mode matlab it is bell shaped and symmetric, and it has single mode which is mostly the min mode median may be showing the same central tendency. It is a comb type जो मैंने अभी explain किया. It is positive skew type जो मैंने अभी explain किया. It is left hand precipice type, यानी कि लेफ्ट साइड को बिल्कुल कुछ नहीं है. हो सकता है कि लेफ्ट साइड में डेटा था लेकिन रिवर्क करके मैं इसका रेजिस्टेंस या तो जो भी वैल्यू है उसको मैं बढ़ा दिया. तो दैट इज व्हाई दैट यू आर नॉट एबल टू सी. और इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इंस्पेक्ट किया और ये साइड में जो था वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसको पूरा स्क्रीनिंग करके बाहर निकाल दिया. दैट इज व्हाई यू आर ओनली गेटिंग दिस. सो if it spreads out too much on this side, you may say that there is a rework which has happened. Plateau type, maybe multiple setting has all along been changing. That is why it is almost looking like a rectangular distribution. Twin peak जैसे मैंने बोला, हो सकता है this has come from two separate suppliers. Isolated peak time, it is possible that the setting related initial setting जो है उसका कुछ data इधर आ गया which are within specification limit. The company did not want to waste them, so they have actually included that in the main population. So I hope you are able to understand what is histogram, how to plot it,
Quickly, if there is any question, I would like to take it.